हो हो। ओके, वी अगेन लाइव। थर्ड टाइम इन अ डे। ओके, तो हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक और लाइव स्ट्रीम में, जहां पर हम देखेंगे स्पेस टूरिज्म थ्रू रॉकेट, न्यू शेफर्ड रॉकेट, जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 मिनट है अभी लॉन्च करने में। स्ट्रीम चालू हो गई है। आवाज़ नहीं आ रही लेकिन कुछ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ये मिशन क्या है। तो ये मिशन है ब्लू ओरिजिन कंपनी का, जो लॉन्च कर रही है, जो आपके सामने है स्क्रीन पे। उस रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट। ये रॉकेट कोई भी पेलोड ऑर्बिट में नहीं ले जाता है, या फिर कोई स्पेस क्राफ्ट, कुछ भी नहीं। ये स्पेस टूरिज्म को लेके रॉकेट बनाया गया है, जिसमें सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म होगा। सब ऑर्बिटल मतलब इसमें कुछ लोग बैठेंगे, पैसेंजर कह सकते हैं उनको। तो वो जाएंगे स्पेस में, सिर्फ 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पे, सॉरी ऑर्बिट पे नहीं जाएंगे, 100 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। वो ऑर्बिट अचीव नहीं करेंगे, इसलिए सब ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिट से कम। ऑर्बिट जैसे सैटेलाइट भेजा जाता है, वो ऑर्बिट अचीव करता है। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। लगता है गिर जाएगा। काफ़ी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। ओके, तो इस बार भी 6 लोग जा रहे हैं स्पेस टूरिज्म के लिए। तो उन 6 में है 6 लोग। तो इस मिशन का नाम है NS-22। 22 इसलिए क्योंकि ये 22 बार लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट। वैसे तो 6 बार ऐसा किया गया है जिसमें पैसेंजर गए हुए हैं स्पेस टूरिज्म के लिए। सबसे पहले शुरू हुआ था 20 जुलाई 2021 में, पहला लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 लोग गए थे स्पेस टूरिज्म के लिए। उन 4 में से 2 थे। एक थे ब्लू ओरिजिन के ओनर, या फिर को फाउंडर कह सकते हैं, या फिर CEO कह सकते हैं। वो Amazon.com के भी CEO हैं, जेफ बेजोस। ओके, उसके बाद लॉन्च किया गया था अक्टूबर में, उसमें भी 4 लोग गए थे स्पेस टूरिज्म के लिए। फिर उसके बाद लॉन्च किया गया था, जस्ट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और मुझे ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी 24 मिनट बाकी है लॉन्च होने में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहली बार कब लॉन्च हुआ था। पहली बार लॉन्च हुआ था जुलाई 2021 में, जिसमें 4 लोग गए थे स्पेस टूरिज्म के लिए। उसके बाद लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में, उसमें भी 4 लोग गए थे। फिर उसके बाद दिसंबर में लॉन्च किया, उसमें 6 लोग गए थे स्पेस टूरिज्म के लिए। तो टोटल 2021 में 14 लोग गए थे, 14 लोग गए थे स्पेस टूरिज्म के लिए। और 2022 में भी 3 बार लॉन्च किया जा चुका है, 2 बार लॉन्च किया जा चुका है, ये तीसरी बार लॉन्च किया जाएगा। और दोनों बार 6-6 लोग गए थे स्पेस टूरिज्म के लिए। तो 2022 में ये आज 6 और लोग जा रहे हैं, तो 2022 में हो जाएगा ये
18 लोग 18 लोग हो जाएगा जो स्पेस टूरिज्म किए हैं। तो ये था एक नया एरा ऑफ स्पेस इंडस्ट्री जिसमें स्पेस टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पहली कंपनी है जो स्पेस टूरिज्म को बढ़ा रही है। दूसरी कंपनी है रिचर्ड ब्रैंसन की ब्लू वर्जिन गैलेक्टिक। वो भी स्पेस टूरिज्म के लिए अपना नया स्पेसशिप बनाई है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट की तरह है। वो दो एयरक्राफ्ट मिलके एक स्पेसशिप को कुछ एल्टीट्यूड पर ले जाते हैं, फिर वो स्पेसशिप आगे जाता है स्पेस टूरिज्म के लिए। वो एक एयरप्लेन की तरह स्पेस टूरिज्म को अंजाम देते हैं, और ये है एक रॉकेट की तरह। तो अभी दो कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू वर्जिन, तो स्पेस टूरिज्म को आगे बढ़ा रही। इनका अगला भी गोल है इनका अगला गोल है एक नया रॉकेट बनाना जिसका नाम है न्यू गैलन। वो करेगा ऑर्बिट पे ले जाने के लिए। तो अगर एस्ट्रोनॉट को या फिर स्पेस टूरिज्म के लिए अगर ऑर्बिट अचीव करना है तो उस रॉकेट से अचीव किया जाएगा। तो न्यू गैलन पे अभी काम चल रहा है। अभी वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है कि न्यू गैलन हमें देखने को मिले, कुछ सालों में मिलेगा। अभी न्यू शेपर्ड रॉकेट ही है। अब जानते हैं कि न्यू गैलन और न्यू शेपर्ड रॉकेट का नाम कैसे रखा गया है। न्यू गैलन जो आने वाला रॉकेट है, सॉरी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले न्यू शेपर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यू शेपर्ड नाम रखा गया है जो फर्स्ट अमेरिकन थे जो ऑर्बिट पे गए थे, जो स्पेस में गए थे, उनका नाम था एलन शेपर्ड। तो उनके नाम पे रखा गया ये रॉकेट का नाम न्यू शेपर्ड। और न्यू गैलन जो नाम रखा गया रॉकेट का, वो रखा गया है कि जो फर्स्ट अमेरिकन थे जो ऑर्बिट पे गए थे, उनका नाम था जॉन गैलन। तो उनके नाम पे रखा गया ये न्यू गैलन रॉकेट। तो इस तरह रखा गया है रॉकेट के नाम। काफ़ी एक्साइटिंग है और एक ट्रिब्यूट हुआ उनके लिए, उन एस्ट्रोनॉट के लिए। तो अभी 20 मिनट बाकी है, क्रू शायद इसके अंदर बैठे हुए हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेस टूरिज्म को अंजाम कैसे देंगे, कि पूरा पाथ कैसे होगा और कैसे किया जाएगा। तो ये 2 स्टेज रॉकेट कह सकते हैं कि 2 स्टेज रॉकेट है। जो पहला स्टेज आपको दिख रहा है ऊपर, वो कैप्सूल है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं। एस्ट्रोनॉट या फिर पैसेंजर या फिर जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। और जो फर्स्ट स्टेज है और जो सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों ही एक साथ, मतलब फर्स्ट स्टेज को बर्न किया जाएगा। फिर कुछ दूरी के बाद सेकंड स्टेज अपने ऑर्बिट पे स्पेस में चला जाएगा। Apologize for some of the difficulties that we were working through earlier today in our webcast. We're at about T-minus 20 minutes until launch. Today's astronaut crew is secure in their seats, waiting to launch to space. There we see a closed hatch on RSS First Step. In just a moment, Capcom Laura Stiles will read a special message from our NS-21 astronaut crew to help send today's crew on their way. ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे स्पेस टूरिज्म किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज लॉन्च होने के बाद फिर कुछ दूरी के बाद सेकंड स्टेज, मतलब जिसमें कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, वो डिटैच हो जाएगा। वो जाएगा 100 किलोमीटर कारमान लाइन पे, जहाँ पे वो जीरो ग्रेविटी फील करेंगे एस्ट्रोनॉट। लगभग 4 मिनट के आसपास वो उनको मौका मिलेगा कि जीरो ग्रेविटी में रहें। फिर उसके बाद कैप्सूल धीरे धीरे वापस आ जाएगा और लैंड करते समय पैराशूट की मदद से ये लैंड कर दिया जाएगा। और जहाँ फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज डिटैच होने के बाद वापस वापस अर्थ पे आएगा, क्योंकि ये रीयूजेबल बनाया गया है फर्स्ट स्टेज को। तो जैसे स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट फर्स्ट स्टेज वर्टिकली लैंड किया जाता है, वैसे ही इसे भी लैंड किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले ये लैंड किया गया था, मतलब ब्लू ओरिजिन कंपनी का पहला था जिसमें वो वर्टिकल लैंडिंग किए थे, लेकिन फैल्कन 9 और स्पेस एक्स ज़्यादा पॉपुलर हो पाया कि
रीयूजेबिलिटी पे। Special view from Earth from above the Kármán line. Astronaut Victor Hespanha. This was one of the most amazing experiences of my life. It has transformed the way I see things and pushed my limits. I hope your eyes photograph every second of this journey. Astronaut VV Victor Vescovo. Look out the window. Get that image burned into your mind so that it can never leave. Look out the window. Astronaut Katya Echazarreta. This is only the beginning. The rest of your journey awaits. Where will this experience take your life next? And lastly, we have a very special message for astronaut Clint from the Blue employees Greg Blinko, Matt Cosgrove, and Nick Greco. There are few people you cross paths with who will forever change the course of your life. Dr. Kelly is one of them. His support and his belief in us, a group of college students in Louisville, Kentucky, with a shared passion for space, allowed us to chase our dreams and knock on doors we may never have come across otherwise. Thank you, and Godspeed, Dr. Kelly. Words of inspiration for our 6th human flight crew from past astronauts and from Blue Origin employees. Thank you, Laura Stiles, for that inspiring message. Blue's astronaut community is growing, and it's incredibly exciting to see them come together and support each other. Continuing in the tradition of past crews, and on behalf of Club for the Future, Blue Origin's nonprofit, today's crew made their own postcards to fly to space. These postcards give each astronaut the chance to share a few words of inspiration for the next generation. We've got some artists, some poets, and of course, true to form, a basketball trick shot. We've flown postcards from all 7 continents, and we invite all of you all to send us your postcards. We'll receive them in West Texas. We'll place them on the New Shepard rocket, fly them to space, bring them back down, stamp them, flown to space aboard New Shepard, and snail mail them back to you. Now, earlier in the show, we were discussing how we're coming to you live from our orbital launch site in Cape Canaveral, Florida, the home of our New Glenn rocket. It's also home to Allison Carone, who will join me here at the desk right after we watch this overview of the orbital launch site. You join us at the desk. Thank you. This is really exciting. So while we were getting some great shots of our progress at the orbital launch site, we did enter a brief hold. In the meantime, Allison, I'd love to learn a little bit about your job role here at Blue. I'm the Director of Program Management for our Launch Facility Development Team. And आई थिंक इन्होंने डिले कर दिया है, देखते हैं। पहले भी डिले हुआ है क्योंकि ये 6:30 बजे लॉन्च होने वाला था, लेकिन 7 बजे कर दिया गया। फिर इसके बाद कुछ और डिले किया गया था, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। इन्होंने पहले भी जब डिस्कस कर लेते हैं।
कि अभी इन्होंने जो पोस्ट कार्ड के बारे में बताया, इनका जब ये 22वां फ्लाइट है, जब पहले 15 फ्लाइट किए गए थे, जब इसमें कोई भी पैसेंजर या फिर कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं थे, तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पोस्ट कार्ड इकट्ठा करते थे, फिर वो कैप्सूल में रखते थे, फिर उसे स्पेस में ले जाके वो अपना टेस्टिंग करते थे, रॉकेट का, कैप्सूल का और सेफ्टी का। लेकिन पोस्ट कार्ड को भी ले जाते थे, फिर जब वो वापस आता था स्पेस में तो उसमें स्टैंप लगा के उनको वापस ही भेज दिया जाता था जिसके पास, जहाँ से ये पोस्ट कार्ड आया है, ताकि उनके पास एक मेमोरेबल चीज़ रह सके जो स्पेस में जाके आई है। तो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि पोस्ट कार्ड मैं भी भेजूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी भेजें और इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, ताकि हम सब एक साथ भेज सकें इनके पास, और हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ हो जो स्पेस में जाके फिर वापस आई है। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बिल्कुल ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। और इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा कुछ लोगों से, और जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उसका। तो ये थी कहानी पोस्ट कार्ड की। आई थिंक अभी डिले कर दिया गया है। The site. You got our two towers, our lightning towers. They're 574 feet tall. They protect the vehicle while the vehicle's out for its 8-hour stay, getting fueled and checked out before we launch. Excellent. So I think we're going to have some footage here of that launch complex. So we'd love to see it. All right, so here's the complex. You can see our stage demonstrator tank that we're actually proof loading right now. And this is the ramp that the vehicle will go up, and our lightning towers. Everything is massive here, and it's a great opportunity to be part of this team and work and develop this. So. No, yeah, absolutely. I think the sense of scale, and we'll get back to that, is definitely impressive. We had a good shot there of the integration facility. Where we can host multiple New Glenn stages. Yeah, really, that's right. We can put 3 in there. And process them. But your team took a launch pad that had seen better days, storied days, historic days, and put a ton of work into it and had what we showed us today. Tell us a little bit about the historic Launch Complex 36. Yeah, there's quite a legacy to live up to. The Atlas program launched 145 missions from our site. So that included our first lunar landing, interplanetary missions to Mars and Jupiter. So we. And these were all probes exploring the solar system, exploring the moon. And so it's a bit of the legacy that we're inheriting here at Launch Complex 36, a launch pad that was used to explore the solar system, and now New Glenn that will also be used to explore the solar system. That's right. Let's talk about that scale of New Glenn. It's a huge rocket. It is. You don't get a sense for the scale until you're next to it, right. And you're looking up at it. It's been a big honor for me to participate. You feel a little dwarfed by comparison. You do. You look up and it's like, how am I going to work on that? But we've said that New Glenn will be the smallest orbital launch class vehicle that we build. How does your team handle future upgrades and planning that in while also getting ready for that first launch? Yeah, I mean, we knew that this is the beginning, right? So we kept that in mind when we developed the requirements, and we're ready for the next orbital vehicle that comes our way. So that's excellent. Appreciate your team really leaning into it and doing the forward planning. As you look at 2022, you've got some impressive milestones this month and through the end of the year. What does that hold in store for your team, for this team here at Orbital Launch Site? Yeah, so I say 2022 is the year for subsystem commissioning and integrated testing. We recently completed our upending system and checking that out. That's going to take our horizontal transporter and vehicle to a vertical launch position. ओके, न्यू शेपर्ड रॉकेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस फ्यूल पे चलता है। और बेसिकली इसमें इंजन लगा हुआ है BE3 इंजन लगा हुआ है, BE4 इंजन लगा हुआ है। आई थिंक अगर मैं नाम BE4 इंजन है या फिर BE3 इंजन है, लेट मी चेक। BE3 इंजन लिक्विड इंजन लगा हुआ है,
जिसमें एक ही इंजन लगा हुआ है, BE3 इंजन। वो इंजन काम करता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पे। तो ये काफ़ी क्लीन फ्यूल है, मतलब इसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन, वो वाटर है। और इमरजेंसी स्केप के लिए इसमें पुश टाइप का इमरजेंसी स्केप लगा हुआ है, सॉलिड बूस्टर। ओके, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, इसका मतलब लॉन्च होने वाला है। 13 मिनट बाकी है सिर्फ। लेट्स सी नॉट ची, इट्स शी, इट्स सी। चलिए देखते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस पता नहीं है कि एक पर्सन का प्राइस कितना होगा। वैसे अगर देखा जाए, दूसरी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक जो स्पेस टूरिज्म कराती है प्लेन टाइप का, जिसमें इसका नाम है स्पेसशिप 2, उसकी प्राइस लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए है एक पर्सन की। लेकिन यहाँ पे अभी ब्लू ओरिजिन ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना रुपए एक पर्सन का लगेगा। हम्म। Welcome to New Shepard 6th human flight. While we wait for this countdown clock to reach 0, let's take a look at the first 5 crewed flights that we've launched in the last 12 months. Okay. System. Jeff Bezos is about to blast off into space. People that have been on this journey has changed their outlook on humanity. Space has always been something I've wanted to do, but it's never been accessible until now. It feels like a turning point where we can open up this experience for more people. I think it's so important to start making the demographics of space look like the demographics of our world. I'm Brazilian, and I'm the second Brazilian to go to space. This is a new era of the unbelievable, where a teacher from North Carolina gets to go to space. Oh, It was amazing. real energy. Feel everything about it. There is Miko, main engine cutoff. Look at that view. Amazing. It's amazing. Oh, Jesus. Looking out the window and seeing the black sky and the curvature of the earth. Holy. I don't think I've ever seen anything like it. And the windows are huge. Absolutely huge. The weightlessness, looking down and like, pretty cool. I love it. Every second of it. Oh. What you have given me is the most profound experience I can imagine. It's just a dream come true. I wanted to do this my entire life. It's almost like an out-of-body experience to see the Earth from that perspective and understand It's kind of how emotional small of a clip. part we are of something so large. Yeah.
all of these flights and a dedicated payload flight in just under a year. This is what building the road to space looks like, step by step, ferociously, 25 astronauts and counting. Next up, the New Shepard Go Pole. All stations, this is the flight director on Channel 1 and UHF voice for the Go Pole for terminal count and launch. Capsule. Go. Booster. Go. Ground. Go. Safety. Go. Capcom. Go. Engineering. Go. Copy all goes. This is the flight director. New Shepard is go for launch. Booster, commence the terminal count. We'll go flight. Okay, let's go. As you just heard, we are go for launch for our 6th human flight. The Titanium Feather Crew, that's what they've named themselves, are a mere minutes from launching to space. So let's meet this crew. In seat number 1 is Sarah Sabri, the first Egyptian to fly to space. She's a mechanical and biomedical engineer and founder of Deep Space Initiative, a nonprofit increasing accessibility for space research. She's fluent in Arabic, French, and English, and her hope for this flight is to inspire the Egyptian people and motivate young Egyptians to pursue education. Mario Ferreira is in seat number 2. Mario will become the first person from Portugal to fly to space. He's an entrepreneur, investor, and president of Pluris Investment Group, which includes more than 40 companies spanning tourism, TV and radio, real estate, and renewable energy. He's a lifelong scuba diver and passionate adventurer who raced the world's most difficult car rally, the Dakar, in 2007. Dr. Clint Kelly is in seat number 3. Clint started the Autonomous Land Vehicle project many years ago at DARPA and is credited with starting the development of the technology base that led to today's driverless cars. He's also a lifelong adventurer. He and his wife have photographed wildlife on every continent, from the high Arctic to Antarctica. But that other special thing about Clint we heard earlier from Laura is he's been a mentor to 3 beloved engineers at Blue Origin, Greg Blinko, Matt Cosgrove, and Nick Greco, who all had a hand in today's launch in developing, designing, testing, and flying the New Shepard rocket. Clint provided financial support and mentorship to the Rocketry Club at the University of Louisville. One of them has said that there are few people you cross paths with who changed the course of your life. Dr. Kelly is one of them, and we're so proud to have you on board. In seat number 4 is Kobe Cotton. Kobe is one of the 5 co-founders of the YouTube channel Dude Perfect, the most subscribed sports channel on YouTube with more than 57 million followers. Dude Perfect is best known for their trick shots and comedy videos. Kobe founded it with his college roommates and his brother Corey. All of the other dudes are on site today, cheering Kobe on. His seat was sponsored by Moondao, whose mission is to decentralize access to space exploration. Now, Moondao members voted to have Kobe represent them on this flight. But in order to get here, Kobe had to beat the other dudes, earn his stripes effectively, in an insane rocket battle launch competition held a few months ago. The pad is clear. We are a go for launch. Welcome to Rocket Battle 3, perhaps the greatest prize on the line in Dude Perfect history. Our rockets are huge, and the winner goes to space. Let's go, baby! That's right, thanks to Moondao, the dude with the highest launch wins a trip to space on a Blue Origin rocket in an upcoming video. It came down to the last launch. We have the altimeter reading. The person going to space, Kobe Cotton. ओह, ये वीडियो मैंने देखी है। इसमें ये खुद का रॉकेट बनाते हैं। ये वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे। ये खुद का ये रॉकेट बनाते हैं। पहले छोटा रॉकेट बनाते हैं, फिर उसके बाद बड़ा रॉकेट बनाते हैं, जिसमें कंपटीशन होता है, जिसका सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाएगा, फिर वो जाएगा स्पेस में, कोई एक बंदा। Telecommunications contractor in the state of Florida. Steve led Youngs from 1992 to 2021. He is an avid fisherman and serves as a committee member of the Space Coast Conservation Association. British-American explorer Vanessa O'Brien rounds out the crew in seat number 6. After this flight, she will become the first woman to complete the Explorer's Extreme Trifecta, a Guinness World Record. The trifecta means she will have reached Earth's highest point, Mount Everest, its deepest point, Challenger Deep, and crossed the Kármán line,
the internationally recognized boundary of space. Truly amazing. Here she is there with NS-21 astronaut Victor Vescovo on an expedition a few years back down to Challenger Deep. A crew capsule full of extraordinary people about to go to space. As we said earlier, they've named themselves the Titanium Feather. Titanium is the 22nd element in the periodic table of elements. It's the 22nd launch of New Shepard, and we're in the 22nd launch of this new millennium. So it's an exciting time for the Titanium Feather, and we're looking forward to your launch. Okay, if you're just joining us, we're minutes away from our 6th human flight. Today's crew is sitting atop a live rocket. Okay, ready to let's to space go and within back. a third And here's 3 the New minutes. Shepard flight profile they're about to experience. हाँ So ये we है, see the new आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है पाथ जिसमें फर्स्ट स्टेज ऊपर जाएगा और सेकंड स्टेज 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पे, सॉरी ऑर्बिट मुंह से निकल जाता है, ऑर्बिट नहीं करेगा, स्पेस में जाएगा और फील करेंगे जीरो ग्रेविटी विद pressure. 4 That मिनट के BE-3 लिए। engine continues to boost the profile until main engine cutoff. That's when the BE-3 engine shuts off and the vehicle travels under inertia until separation, becoming two vehicles. The booster reaches apogee first, then starts to re-enter. The fins steer the booster back to the landing pad. The drag brakes deploy, cutting the speed of the vehicle in half for that BE-3 engine restart, and then coming in for a soft landing in the landing pad in the West Texas desert. Meanwhile, in the capsule, as it was much slower to re-enter due to its shape, the astronauts enjoyed minutes of microgravity and a view through some very large windows. As that crew capsule re-enters the atmosphere, the drogues deploy, the mains deploy shortly thereafter, and as that crew capsule comes in for a soft landing, the landing systems engage, measuring the height and firing the terminal decelerator system. Just above the ground, we see the poof of dust and touchdown with 2 minutes to go. Let's watch and listen as the New Shepard goes through its final checks and revs up for 6th human flight. Oh, let's go. Okay, they are going to space. And in this shot here, we see the access tower for the crew capsule has been pulled back. We've got a great shot there of the aft fins going through the motions. These fins help direct the vehicle on ascent and descent. If you're looking closely at the bottom of your screen, the BE-3 engine is gimbaling. This is the primary control authority for the vehicle on ascent and descent, and of course critical for that soft landing on the landing pad. Okay. With just 30 seconds to go for today's launch, it's time to hand it off to Mission Control and launch this rocket. T-minus 16 seconds, guidance internal. 15 seconds बाकी हैं. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, Go, go, 5, go, go. 4, command engine start, 2, 1. Sound. Mission Control has confirmed the New Shepard has cleared the tower and is heading to space. Godspeed, Titanium Feather. On the left-hand side of your screen, you can see that we are gaining speed as New कितनी Shepard तेज gains आवाज थी. altitude. We started at about 3,700 feet above median sea level. Sorry, and that's sorry. where launch site 1 is located. There we've got a great shot of the BE-3 and, of course, of the booster looking down at West Texas. ये पूरा मिशन 20 मिनट के अंदर अंदर सारा खत्म हो जाएगा. 10 मिनट इन्हें लगेगा कैप्सूल से आने जाने में, 4 मिनट लगेगा जीरो ग्रेविटी फील करने में. लगभग
10 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ दूसरी तरफ बात करें, जो स्पेस कंपनी है स्पेस टूरिज्म को बढ़ा रही है, वर्जिन We've hit गैलेक्टिक, our next milestone, max Q, the point where aerodynamic stress on the vehicle is at its maximum, and that BE-3 engine gets to flex its muscles, throttling down to reduce those stresses. उसको 2 घंटे लगते हैं पूरा फील करने में, मतलब पूरा मिशन कंप्लीट होने में 2 से 3 घंटे। ओके, सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ। काफ़ी तेज़ आवाज़ था न्यू शेपर्ड रॉकेट का। आई थिंक माइक काफ़ी तेज़, मतलब काफ़ी पास Our रखे थे next क्या? milestone will be main engine cutoff, but in the meantime, the BE-3 is back to 110,000 pounds of thrust, powering New Shepard and its crew to space. Okay. Looking very good. Everything is fine. Okay. तो अभी 6 लोग गए हैं स्पेस टूरिज्म के लिए न्यू शेपर्ड रॉकेट की मदद से। लिफ्ट ऑफ हो गया है पिछले 2 मिनट में। अब डिटैच हो जाएगा फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो कैप्सूल है, क्या हो गया कैमरे को, हमें अंदर का लाइव फोरकास्ट नहीं मिलेगा, वो बाद में इमेज के द्वारा मिल जाएगा ब्लूओरिजिन के वेबसाइट And पे। it looks to have been a successful main engine cutoff with the vehicle traveling at more than 2,000 miles per hour and 200,000 feet of altitude. Our next milestone will be separation of the crew capsule and the booster for 0G. ओके, इंजन कट ऑफ हो गया है। नेक्स्ट माई चेक Momentarily पॉइंट cue the ये है astronauts कि to unbuckle their harnesses after सेपरेट हो जाएगा कैप्सूल और रॉकेट। Sarah, Vanessa, Kobe, Mario, Clint, and Steve, welcome to space. ओहो, ये कैप्सूल के अंदर एस्ट्रोनॉट जो बैठे हैं उनकी आवाज़ आ रही है। दे आर एंजॉइंग। ओके, सेपरेट हो गया। Sounds like they're having fun up there. We gotta thank you, Laura, our Capcom. Now we've just received. Look at the blackness. Oh man, God. Oh my, we're above the earth. Oh my God, that's you upside down. Oh. See the curvature of the earth. Take it in. Take it in. What happened? Give us any update about it, please. 1 minute warning. 1 minute warning. 1 minute warning. 1 minute warning. That's it. Guys, the way you play. एक्साइटिंग होगा देखना लैंडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू बूस्टर न्यू शेपर्ड रॉकेट। वो काफ़ी स्टेबल की तरह लैंड करता है, जैसे फैल्कन 9 तुरंत लैंड करता है। पर आप अगर इसको देखोगे न्यू शेपर्ड रॉकेट को, तो एक ज़मीन तक आते आते थम सा जाता है, फिर उसके बाद लैंड करता है बहुत सेफली। या बताओ भाई। Congratulations to all 6 crew of the Titanium Feather. They just officially became astronauts with an apogee well over 100 kilometers, the internationally recognized boundary line of space. Both the crew capsule and booster are now descending. न्यू शेपर्ड रॉकेट आ रहा है, इसकी लैंडिंग देखना है। Shot
on your left as that rocket is now reaching its atmospheric pierce point, returning from space and entering the atmosphere. Those control surfaces that raise the center of pressure on the vehicle now have a little bit of air pressure to push against. That's the ring fin and the forward fin, and the booster will be reaching its maximum re-entry velocity here just under Mach 4. Mach 4 पे चल रहा है. Oh. Starting to slow down here now, the wedge fins, the steering fins, and the ring fin all working together, earning their keep to guide this booster home. लैंडिंग देखना काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि काफ़ी मतलब जेंटली लैंड करते हैं ये न्यू शेपर्ड रॉकेट. और फील द साउंड प्लीज़. And there's that passive downward stability with the center of mass and center of pressure having inverted relationships now. Great close-up of the BE-3 engine. Shocko. There it is, engine ignition, engine relight coming in for a landing. देखा. Successfully touchdown. Welcome back to Earth, New Shepard. For a lot of us at Blue, this moment in flight is one of our proudest moments, really showcasing what the BE-3 engine and the New Shepard booster are capable of. Really just incredible engineering. No matter how many times we've seen this happen. देखा कितना एक्साइटिंग था देखना लैंडिंग, क्योंकि एक टाइम के बाद आके एकदम थम सा जाता है. ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में. लेकिन फैल्कन 9 रॉकेट का जो फर्स्ट स्टेज है वो काफ़ी तेज़ी से लैंड करता है. उसमें वेस्ट नहीं होता ज़्यादा फ्यूल. इसमें फ्यूल वेस्ट होता है थोड़ा सा, और अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स है हर चीज़ के. ओके, कैप्सूल वापस आ रहा है. इन्होंने पूरा कर लिया, लगभग 8 से 10 मिनट कहा था. तो स्पेस टूरिज्म को एक्सपीरियंस करते हुए वापस आ रहे हैं. पैराशूट डिप्लॉय हो गया है. कुछ मिनट में ये टच डाउन हो जाएंगे ये भी कैप्सूल के साथ. And those drogue chutes have now pulled out the main chutes that will begin to fill with atmosphere to further stabilize the booster. If you're just joining us, this is our 6th human flight. The booster has landed, and our crew, Titanium Feather, is on its way back to Earth. हाँ, जो ये क्रू मेंबर गए हुए हैं इस कैप्सूल में, उन्होंने अपना नाम रखा है टाइटेनियम फेदर. ओहो, आवाज़. मस्त मजा आ रहा है. Oh my gosh. Nothing quite like living in the moment. What a beautiful shot there of the booster, and the crew capsule looks to be maybe a little south or southwest of the landing pad, and of course that great West Texas backdrop. ओके, मिशन सक्सेसफुल. जहाँ पे 6 क्रू मेंबर या फिर एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं, क्योंकि ये कारमान लाइन के ऊपर चले गए हैं. कारमान लाइन वो होता है जहाँ पे हम उसके ऊपर को मानते हैं स्पेस, वो है सी लेवल से 100 किलोमीटर के ऊपर. तो ये कैप्सूल 100 किलोमीटर के ऊपर जाके वापस आ चुका है, जिसमें 6 लोग गए थे फील करने, ज़ीरो ग्रेविटी फील करने, स्पेस को फील करने, स्पेस के अर्थ के कर्वेचर को, और नया एक्सपीरियंस करना जो आज तक अपने लाइफ में उन्होंने नहीं किया है. तो ये था एक स्पेस टूरिज्म का लॉन्च. NS-22 रखा गया इसका नाम, क्योंकि ये 22 बार लॉन्च किया गया है न्यू शेपर्ड रॉकेट. ऐसा 6 बार लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें 6 अलग अलग क्रू मेंबर स्पेस टूरिज्म को एक्सपीरियंस किए हैं. पहला लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में. उसके बाद 2021 में 3 बार लॉन्च किया, जिसमें 14 मेंबर गए थे. 2022 में टोटल 18 मेंबर जा चुके हैं स्पेस टूरिज्म को. अब आगे भी और भी जाते रहेंगे. स्पेस टूरिज्म के लिए आप भी जा सकते हैं अगर इनके वेबसाइट पे जाके
तो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। ये मिशन सक्सेसफुल रहा जिसमें लॉन्च किया गया न्यू शेपर्ड रॉकेट की मदद से स्पेस टूरिज्म। ओके, सक्सेसफुली हो गया। इसके अंदर की वीडियोस और इमेजेस आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, ब्लू ओरिजिन वेबसाइट पे, जहाँ पे ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इनका इंटरव्यू भी मिल जाएगा अलग अलग चैनल पे, या फिर यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, इनके चैनल पे यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। आज के लिए बस यही। आज 3 लॉन्चेस हमने कवर किए, पहला सुबह, फिर सेकंड यूएलए, और तीसरा है ये ब्लू ओरिजिन का। तो अब आगे एक और लॉन्च है अपना इंडिया का 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जो SSLV का लॉन्च है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो भी हम कवर करेंगे लाइव स्ट्रीम में। तो आशा करते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अलग लाइव स्ट्रीम में और इंटरेस्टिंग लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। बाय बाय, अपना ख्याल।